नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विद कीपिंग दिस थीम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन को ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसी को ही इंट्रापर्सनल डायमेंशन ऑफ द सेल्फ भी बोलते हैं और इसी को ही सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट नेम्स given to the same concept, that is emotional question. In, and I would like to start this video with the beautiful lines of Aristotle, which reads, educating a mind without educating a heart is no education at all. And it's very true. If your education is training your mind only, that is nothing but the training of logic, training of your reasoning ability. But if it is not training your emotions, then it is no education at all. We will see in the details how it is highly relevant in today's scenario. In the previous video, I talked about that. I told you that there are 4 dimensions of your personality. That is, and we dealt with the PQ in details. We also dealt with the IQ in the previous video. Today we will deal with the emotional question. If you see at the microscopic level, so logic is nothing but the function of the left part of your brain, and emotional intelligence, that is nothing but the regulation of your emotions, is the function of right part of your brain. So you can say that in order to have the balance between logic and emotion, you should first have the harmony between योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन ढंग से काम करते हैं, दे आर इन हार्मोनी, देन ओनली यू विल हैव द बैलेंस बिटवीन द लॉजिक एंड इमोशन। And when you will have the balance between logic and emotion, you will automatically enter into the leadership position. There is no title required for you. There is no need, that there is no declaration need to do that you are a leader. In fact, people will automatically proclaim that you are their leader and they will start following you. So irrespective of whether it is a military leadership or corporate leadership, you need to have the balance between logic and emotion. अगर आपका balance है logic and emotion का, forget about the leadership. Even to live a healthy life, you need to have this balance. I would like to go through this interview. I'll play this interview, and all of us know that why MS Dhoni is widely known. He is known for his inexplicably calculated and calm mind and decision making abilities, and he is explaining the role of emotion in decision making. And I'll also explain the decision making at the end of this video. Just a sec, it's not working. I control my emotions slightly better than some of the other individuals, because I feel, human beings have a lot of emotions, and especially us Indians, we thrive on emotions. So, it will be wrong to say that, these are something that doesn't come to mind. Yes, I also face each and everything, but I always felt that my emotions should be under my control, and if I'm able to do that, then my thinking will be more constructive, and also it will help me think more about the process than the result, because result can put undue pressure on the individual. Okay, you listen to this video, you can find that he's explaining that it's very important to have emotion under your control. Then only you will be able to make a better decision making and you will have a clarity of mind. I control my emotions. Now, so if you see that this is a leader and he's talking with his team,
And you can see over here that if he is not an emotionally intelligent person, agar ye leader hai who is an officer, and no doubt at all, if he is an officer, then he will have a high degree of emotional quotient, that is emotional intelligence. If he has an emotional intelligence, then only he will able to connect with each and every member of his group, and it's highly logical. अगर आप एक लीडरशिप के पोजीशन में जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिकम अ हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि खुद की इमोशन को समझना और उसके हिसाब से उनको मैनेज करना, और यू शुड नॉट लेट इमोशंस कलर योर डिसीजन मेकिंग. उसी तरीके से दूसरों की इमोशंस को समझना और उस तरीके के उनके साथ बिहेव करना, दिस इज नथिंग बट द इमोशनल इंटेलिजेंस. इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज आई हैव टोल्ड यू, इन अ सिंपल लैंग्वेज, कि आपकी जो भी इमोशंस है उसको समझना और उनको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना, और एट द सेम टाइम दूसरे जो आपके मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर्स है, जो आपके लीड, जो आपके टीम में लोग हैं, उनकी इमोशंस को समझना और उस तरीके से उनके साथ बिहेव करना, दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अ लीडर, फर्स्ट अ लीडर, there is a high degree of self awareness when it comes to leadership. A leader is highly self aware. मतलब एक लीडर को खुद की इमोशंस का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है. देन ओनली he will able to manage the others. See, in leadership it is said that there are two worlds. First, there is a world in your inside your head, and the another world is outside world. If you are able to manage what is going inside your head or inside your mind, then only you will able to manage what is outside of your mind. If there is a chaos inside your mind, you will not able to manage the world outside. I hope I am making myself clear. So in order to get into the leadership position, you need to navigate the emotions very judiciously. सो एक लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. वो उसके ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उनके चेहरे को देख के ही उनकी इमोशन समझ लेता है और उस तरीके से उनके साथ बर्ताव करता है. इफ यू सी दैट, अगर आप मैच वगैरह देखते हो तो यू कैन सी एम एस धोनी इज अ ट्रू लीडर. वेन एवर उसको लगता है कि उसके बॉलर या कोई टीममेट्स को उसकी जरूरत है, he automatically goes there, instantly he goes there and he talk with him, so that he let other team members relieve their pressure, and then only they can perform in a better way. नाउ मैं बोल रहा हूँ इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, या एम एस धोनी बोल रहा है इसलिए है क्या? नाउ लेट्स सी, दिस इज द रिपोर्ट आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द वीडियो ऑफ मेंटल हेल्थ. क्यों इमोशंस की इमोशनल ट्रेनिंग की जरूरत है? दिस इज द रिपोर्ट गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, ये 2022 में आया था. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, मेंटल इलनेस मे बी टर्निंग इनटू द बिगर क्राइसिस देन अ कोविड-19. इसका मतलब सिंपल है कि अगर हमने इमोशनल की ट्रेनिंग नहीं की तो वी विल बिकम वल्नरेबल टू द मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स. एंड जितनी तबाही कोविड-19 ने मचाई थी, उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाने का काम ये मेंटल इलनेस कर सकता है. एंड द प्राइमरी reason behind the mental disorders is nothing but the imbalance of the emotion. When there is a, for example, if something happened in your life and if you are not able to manage your emotional makeup, then high probability that you will diagnose with the depression and multiple psychological conditions. So this is the first reasoning, or the first justification of whatever I am trying to convey over here, and that is, this shows that our society is in a dire need of emotional training. Now this is another report. This report is given by the this UNICEF का रिपोर्ट है ये. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हर साल एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है. अब इसमें आप देखोगे तो इंडिया इज नॉट अ हैप्पी कंट्री at all. If you see the ranking of the India, then India is way, in fact इंडिया का नंबर देखोगे तो 126 पे आता है. पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, श्रीलंका, बांग्लादेश, दिस पीपल आर वे मोर हैप्पी देन इंडियंस. तो बेसिकली वी कैन से इंडिया में बेसिक दुखी आत्माएं रहती है. एंड दिस इज द अगेन द सेकंड justification of whatever I am trying to convey, that there is a dire need of emotional training. And we can see this is the latest report
लेटेस्ट हुआ था अभी JEE का जो मेंस का पेपर हुआ था, वहां पे वन गर्ल इन अ कोटा सिटी कमिटेड सुसाइड बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू मैनेज हर इमोशंस, एंड उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था एग्जाम का, पढ़ाई का एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बेचारी ने सुसाइड कर लिया एंड शी लेफ्ट दिस सुसाइड नोट, मम्मी पापा आई कांट डू JEE so I suicide. She said, I am a loser. I am worst daughter. Sorry, mummy, papa. ये यही last option है. You can see that how much emotionally, emotionally driven that, emotionally drained she was, and there was no one to help her. And ultimately, बिचारी ने suicide कर लिया. Who is responsible for her suicide? That is nothing but ये system ही इस चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो दीज थिंग्स शोज दैट वी आर आवर सोसाइटी इज इन अ डायर नीड ऑफ इमोशनल ट्रेनिंग. एंड जस्ट इमेजिन दैट जब आपको एग्जाम के टाइम पे प्रेशर आता है, तो क्या आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में चलो पकड़ लो 99% मिलते हैं और आपके लाइफ में अगर कुछ होता है, तो क्या आप आपकी इमोशंस को हैंडल कर पाते हो? अगर और जब आपको टेंशन स्ट्रेस वगैरह आता है ना, तो आपके परसेंटेज काम में नहीं आते हैं, आप वहां पे काम में आता है कि आपने आपकी इमोशंस को कितना ट्रेन किया है. ओके, एंड जब आपको सक्सेस, इफ यू वांट, एवरीवन वांट सक्सेस, बट सक्सेस पाने के लिए 10 बार फेल होना पड़ता है. तो वो 10 बार फेल होने के होते हो जब आप, इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट अ फेल्यूर, यू कैन नॉट एंजॉय द सक्सेस, यू कैन नॉट टेस्ट द रियल सक्सेस. अगर आप फेल्यूर को ही हजम नहीं कर पाते हो, तो सक्सेस को कैसे पाओगे? And in order to digest a failure, you need to have the training of your emotion. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. Now the simple way I am telling you, there is no shortcut for the emotional training. The best way I am telling you to train your emotion is through the meditation. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो यू कैन ट्रेन योर इमोशंस. नाउ मैं बाकी किसी चीजें में आई डोंट बिलीव इन बैंडेड सॉल्यूशंस, मतलब शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशन में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, निप इट इन अ बर्ड, मतलब उसको जड़ से निकाल के फेंको. इफ यू आर ट्रेनिंग यू, इफ यू आर डूइंग अ मेडिटेशन, मेडिटेशन विल ट्रेन योर माइंड, इट सब्सिक्वेंटली इट विल ट्रेन योर इमोशन. और जो भी दिक्कत होती है आपको, उसको यू विल नीप इट इन अ बर्ड, मतलब आप उसको जड़ से निकाल के फेंक दोगे. एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट. बाकी बाकी कुछ नहीं करना है आपको. देर आर नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. यू कैन सी इमोशनल, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, बट दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल ट्रेनिंग करना है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज गेट इन टू द हैबिट ऑफ मेडिटेशन. और मेडिटेशन को करने के लिए कहाँ से करोगे? इफ आई एम रिकमेंडिंग यू to do the meditation, and if I am not telling you how to meditate, it is an incomplete advice. You might have come across a different people who advise to do the meditation, but कैसे करना ये कौन बताएगा? When I started doing meditation, मुझे कुछ पता नहीं था. तो best thing you can do, there is a app, waking up app. आप इस, this is the best waking up, this is the best meditation app I have ever came across, and I have been training my mind for the last 5 years using this app. So all you need to do is download this app and take a subscription and start doing meditation from it. If you want to, if you want to take an experience of this app, all what I am giving you this I am giving you this option also. You can drop me a message in the, you just drop your WhatsApp number in the comment section. I'll send you a link. You can go, you can go over there, and you will get a subscription of 1 month free, and you can train your emotions from there. Again, I am telling you, there is no shortcut when it comes to the emotions. Now in, and this is the easiest way to control your emotions. इसे meditation में labeling and noticing technique बोलते हैं. So what you need to do, this is very easy technique, but जितना easy है, उसका जब stress आता है, when you are colored with the emotion, वो समय करना it's very difficult. So simply आपको क्या बोलना है? Instead of saying I am really anxious, what you need to say, I am experiencing anxiety. The moment you say I am experiencing anxiety, you are detaching yourself from that feeling, and you are considering that anxiety as an object. And this is a very true, because at the most fundamental level, there is nothing called these feelings, thoughts, ये बस they are like a travelers, वो आते हैं जाते हैं. If you give much attention to them,
they will disturb you. और जितना फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थॉट है आपके माइंड में, कोई इमोशन है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आप उसको जितना रेजिस्ट करोगे वो उतना ही आपके पीछे आएगी. So better, this is a labeling technique. I am giving you a short, in a nutshell I am telling you about this, but in order to train you, you need to do the meditation, you need to train your mind through the meditation only, because meditation, exercise, sleep and reading, these are the non-negotiable things. And instead of saying I am beyond anger or I am angry, you can say that I am holding anger. The moment you say that I am holding anger, you are uh, you are considering anger as a completely different entity than you. तो एंगर जैसे ही आप बोलते हो तो इट बिकम्स another object and you can separate yourself from that. So instead of saying I am so sad, you can say I have a sadness in me. So जैसे ही आप I have a sadness in me ऐसा आपके माइंड को ट्रेन करते हो, तो it implies that it is a completely different object from you and it is just a passenger. It is passing through your consciousness, that's it. So now I'll talk about the role of emotions and decision making. Decision making में emotions का क्या रोल है और कैसे हम better decision making कर सकते हैं. जैसे इसको दिक्कत हो रही है चूज करने में कि ये बिस्किट खाओ या वो बिस्किट खाओ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लाइफ में डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत होता है व्हेन इट कम्स टू इमोशंस. इनफैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस दिस lot of, I always used to get colored with the emotion and that used to affect my decision making ability. But now I can navigate through my emotions in a better way. So let's see the role of emotion in decision making. Now before that, I would like you to introduce with this fantastic personality. He is Viktor Frankl. He is an Australian psychiatrist. He's not only a psychiatrist. If you go in his history, you will understand he is the survivor of the Holocaust. Holocaust is nothing but जो हिटलर ने जर्मनी में किया था, जैसे जूस कम्युनिटी को उन्होंने जैसे मारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसे होलोकॉस्ट बोलते हैं. एंड उसमें हिटलर ने मिलियंस ऑफ जूस को मार दिया था. यू कैन सी दिस डेड बॉडीज, टॉर्चर एंड ऑल दोस थिंग्स. दे बिल्ट अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोलते हैं, जहाँ पे इन लोगों पे मिलियंस की क्वांटिटी में लोगों को टॉर्चर एंड मारा गया. दिस इज द वर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर. यू कैन सी कि क्या कंडीशन थी. दीज आर द प्रिजनर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. एंड दिस विक्टर फ्रैंकल इज द सर्वाइवर ऑफ दिस, जो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप था वहां से वो, ही वॉज द सर्वाइवर ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप, मतलब वो बचा था. ही सर्वाइव्ड ऑल दिस डिफिकल्ट कंडीशन एंड ही गेव अ मॉडल of decision making which I would like to share with you. Now always remember that between stimulus and response there is a freedom of choice, and when it comes to freedom of choice, simply ऐसे इसको समझो. फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अब जैसे ही आप ये सुन रहे हो दैट इज नथिंग बट अ स्टिमुलस, एंड रिस्पॉन्स होने से पहले आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे करोगे, देयर इज अ फ्रीडम, समथिंग गोज इन इनसाइड योर माइंड. दिस इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू. मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद आपके रिस्पॉन्स कैसे डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे. ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इमोशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, क्या आप थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्या आप आप में खुद चेंजेस लाना चाहते हो, तो इट इज कंप्लीटली अप टू यू. सो बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस. एंड विक्टर फ्रैंकल सेड दैट यू कैन टेक फ्रॉम अ पर्सन एनीथिंग, मतलब आप इंसान से सब कुछ ले सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रॉम एनी पर्सन. मतलब किसी के पास से ये जो उसका जो ताकत होती है चॉइस करना खुद की, नो वन कैन टेक दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रॉम पर्सन. एंड यू विल, एंड in fact you should never let anyone tamper with your freedom of choice. So if I make it more clear at a microscopic level, so between stimulus and response there is a freedom of choice. Now this is a proactive decision making model. This is a proactive decision making model. Now see, जैसे ही आपके कुछ होता है आपके लाइफ में, you have a time, there is something, freedom of choice होता है, आपको कुछ समय मिलता है, and then you respond. Most of the time what happens, we instead of thinking we directly respond. So if anything happens in your life, just make sure you take a pause of some seconds
and think over it, and that then exercise your freedom of choice and then decide your response. Most of the time कुछ difficult situation में चीजें automatically respond होती हैं, we feel that situation is going out of our hand, and that is nothing but कि हम freedom of choice को express ही मतलब कर नहीं सकते हैं ऐसे difficult situation में. So basically मैं इसको explain करता हूँ. If this is your mind, for example, mind is a thinking machine. आपका mind हमेशा सोचते रहेगा. इट इज अ थिंकिंग मशीन. कुछ भी थॉट्स कुछ भी आते रहेंगे आपके दिमाग में. दिस इज इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट नथिंग बट द लॉजिक. अब एंड दिस इज सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स एज अ रिकॉर्डर. मतलब बचपन से आपने जो भी चीजें सुनी है, भले ही आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, बट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द सबकॉन्शियस माइंड. तो यहाँ से चीजें आती है सबकॉन्शियस माइंड से. अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग एनीथिंग, आपको कुछ डिसीजन में रहना है, माइंड कुछ भी सोचते रहेगा. नाउ यू कैन कंसिडर दिस माइंड एज अ एडवोकेट and you can consider this intellect as a judge. Now just imagine advocate का काम होता है जज के सामने दलीलें पेश करना. Just imagine अगर जज एडवोकेट ही जज बन गया, it will become a very difficult situation. मतलब अगर माइंड ही, if your mind is your master, then it becomes very difficult to handle a life. So what you need to do, अगर आपके माइंड में कुछ भी आता है, at that time it's very important to activate your intellect. Intellect is nothing but a logic जो आपका left part of your brain होता है. तो whenever you are come across any problem, just take a pause, think about it, and then respond. Instead of just responding in a heat of the moment, better you take some seconds. Now इसमें क्या होता है, in this mind आपको basically, जो आपने बहुत लोग देखे होंगे आपके सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में, आप ऐसे देखना कि जो जो भी लोग अपने मन की करते हैं ना, वो सिर्फ माइंड उनमें ज्यादा एक्टिवेट होता है. मतलब कुछ भी जो मन में आया वो करते रहते हैं. इंटेलेक्ट उनके ऊपर कुछ नहीं होता है. इन ऑर्डर टू योर माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, एंड इफ यू वांट टू राइड ऑन इट, यू हैव टू डोमेस्टिकेट इट विद द रीन्स ऑफ योर इंटेलेक्ट. मतलब आपके माइंड को इंटेलेक्ट की लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंड इज अ वाइल्ड हॉर्स. कुछ भी सोचते रहेगा, कुछ भी दिमाग में आते रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे, कभी इधर है तो कभी उधर है. तो वहां पे जो इंटेलेक्ट है, लॉजिक, उसकी लगाम ब्रेक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में, इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर, मुझे कुछ फील हुआ, मुझे बाहर घूमने जाना है, ऐसे ऐसा माइंड बोलेगा. बट इफ आई एम अ इमोशनली ड्रिवन पर्सन, मैं अपने माइंड की सुनूंगा. आई विल नॉट लिसन टू द इंटेलेक्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. सो मेक श्योर दैट कि ये लॉजिक को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज यू विल बिकम इमोशनली ड्रिवन पर्सन. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ होता है तो जो स्ट्रेसफुल होते हैं. इट्स ओके टू गेट स्ट्रेसफुल, बट उस स्ट्रेस की सिचुएशन से आप कितने जल्दी बाहर आते हो, दैट डिटरमाइंस ईच एंड एवरीथिंग. समटाइम इट्स ओके टू फील नॉट ओके. It's okay to feel anxious. It's okay to you are allowed to feel stressful. But how much time do you take to bounce back determines your ability. अगर आप वैसे ही बैठते हो तो you cannot move forward in your life. So this is the best proactive decision making model. What you need to do whenever you came across any problem, just take a few seconds, take a pause, and then use your logic, use your subconscious mind, and then respond. I hope you are understanding, and this is the best decision making model I always follow in my life whenever it comes to decision making. नाउ अगर एक समय ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि आप सोचते ही रह जाओगे. फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साला चल क्या रहा है, व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. एंड इफ यू आर रियली रियली रॉयली मैस्टिफाइड, इफ यू आर रियली कंफ्यूज एंड कुछ डिसीजन मेकिंग में समझ भी नहीं आ रहा है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ. जस्ट टेक अ डिसीजन, एनी डिसीजन यू कैन टेक. फॉर एग्जांपल देयर आर टू ऑप्शंस यू नीड टू चूज. कौन सा कॉलेज चूज करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्या करना है, क्या बहुत ज्यादा अगर समय होता है, चूज एनीवन. आफ्टर सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वो आपने सही डिसीजन लिया है या गलत दिया है. इफ यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, इट्स फाइन. आप आके चेंज कर सकते हो. यू आर अलाउड टू चेंज इट. वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस. वी कमिट अ मिस्टेक एंड इट्स ओके. इट्स ओके टू कमिट अ मिस्टेक, बट उसको रेक्टिफाई करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. तो अगर आप बहुत कंफ्यूज होते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज दोनों में से एक भी कोई भी ऑप्शन को चूज कर लो और आगे बढ़ो. आफ्टर सम टाइम जैसी वो क्लटर, जैसी वो केओस इनसाइड योर माइंड,
जो कचरा जो नीचे का ऊपर आता है माइंड में, जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाता है, यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड. एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी विथ यू, जो मैं व्हेन आई वाज completely कंफ्यूज इन माई ओन लाइफ, और जब भी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है मैं उस स्टोरी को फॉलो करता हूँ. व्हेन आई जब मेरा कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर धसा हुआ था, at that time I came across this story. So there was a horse and a boy, they were going to the forest, and boy said to the horse ki I am not able to see what, I am not able to watch whatever is, I am not able to watch the uh, path which is present in front of me. तो बच्चा बोलता है कि घोड़े को बोलता है कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे काफी डर लग रहा है आगे जाने में. तो घोड़ा उसको बोलता है, आर यू एबल टू सी योर नेक्स्ट स्टेप? क्या तुझे अपनी अगला स्टेप दिख रहा है? तो लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है कि हाँ, आई एम एबल टू सी माई नेक्स्ट स्टेप. तो घोड़ा बोलता है, जस्ट टेक इट, फोकस ऑन दैट स्टेप ओनली ना. ये स्टोरी जितनी आसानी से मैंने बोल दी, उतना ही डेप्थ इस स्टोरी में है, बिकॉज आई एग्जीक्यूटेड इट इन माई ओन लाइफ. आपके लाइफ में कभी ऐसा बहुत प्रॉब्लम आएगा जब आपको कुछ भी नहीं समझेगा, एट दैट टाइम याद रखना, ऑल यू नीड टू, अगर ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है कि अगला क्या लेना है, उसी के ऊपर ध्यान दो, रादर देन मेकिंग एंड रादर देन टेकिंग अ बर्ड्स आई व्यू. बहुत ज्यादा इमेजिन करके, जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा माइंड आपको डिस्टर्ब फील होगा. तो दिस इज द बेस्ट टेक अवे स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जस्ट टेक अ नेक्स्ट स्टेप, दैट्स इट. And this is a Mike Tyson का बहुत अच्छा sentence है. He said that you have to train your mind to be stronger than your feelings, otherwise you will lose yourself. So that's why I'm trying to convey the same message throughout this video, that you need to have the balance of emotion as well as logic. अगर दोनों चीजें balance में नहीं है, you will lose yourself. You will not survive in this 21st century. Now this is a very beautiful lines. Now it's highly controversial who said this line. कुछ लोग बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने बोला है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है. We are least bothered किसने बोला था. I just liked it, that's why I decided to share with you guys. The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Now throughout the video I talked about the emotion, और आपको लग रहा होगा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इमोशन सही नहीं है, अच्छी नहीं है. नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशन गलत है, इमोशन होना ही नहीं है, फीलिंग्स होना ही नहीं है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हार्टेड, स्टोन हार्टेड पर्सन. नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट. आई एम ओनली टेलिंग यू दैट you need to maintain the balance of emotion as well as logic. There is a Rumi is a Arabic poet, 17th century Arabic poet. He said everything in excess is a poison. मतलब कुछ भी एक्सेस होता है आपके लाइफ में तो पॉइजन बन जाता है. इन द सेम वे यू नीड टू हैव, हैविंग अ इमोशन मेक्स अस ह्यूमंस. इनफैक्ट इमोशन मेक्स अस ह्यूमन. तो ऑब्वियसली इमोशंस होना, स्पेशली वी आर इंडियंस, so we have lot of emotion as compared to the other people of the world. So इमोशंस होना कुछ बुरी बात नहीं है, बट ऑल आई एम टेलिंग यू दैट इसका कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू आर इमोशनली ड्रिवन पर्सन, you will not able to manage your life. And emotionally driven, emotionally, you don't make sure that emotion doesn't color you when it comes to decision making. So always remember that you need to have the balance of emotions as well as logic. इन दोनों का अगर बैलेंस है तो फंटास्टिक, you will be have a very good life, and as a result of it you will get into a leadership position. Now we saw that there is something. In the first video we talked about PQ, in the second video we talked about the IQ, and in this video we talked about the emotional question. So it's important to have the balance between logic and emotion. अगर आप में IQ ज़्यादा है और emotion अगर कम है, you will become a egoistic person. आप ऐसे, आप आपके आजू बाजू में लोग देखना, जो लोग होशियार होते हैं या फिर ज्यादा जिनको कुछ आता है, उनमें इमोशनल मेकअप नहीं रहता है अच्छा, दे बिकम इगोइस्टिक पर्सन. एंड इफ यू हैव अ लो IQ एंड यू आर हाईली, मतलब इमोशनल क्वेश्चन भी जीरो है
इमोशनल क्वेश्चन भी लो है और IQ भी लो है, यू विल बिकम अ फूल, पीपल विल फूल यू, अब बेवकूफ बन के रह जाओगे. So it's very important to have the balance of EQ and IQ. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. So that's it for today, guys. This is my YouTube channel. If you like this video, make sure that you like it, subscribe it, and share it. This is my Instagram channel. You can connect with me through the Instagram. Siddhant Life Skill is my Instagram channel. Thank you for watching this video, guys. Thank you. Have a great evening ahead.